Hello students, welcome again to my channel. Today we will discuss about the question or paper pattern of CUET paper third general test. In the general test, there will be total 75 questions. 25 question will be of general awareness or GS, 25 question will be of reasoning and 25 question will be of maths. So today we will discuss the how the total 25 questions will come from reasoning part, that is the analytical and logical reasoning part. Total you have given the 75 questions and you have to attempt 60 question out of it in 60 minutes. So you can left the left out 15 questions from the paper, that is 75 questions you have to do the 60 questions, 15 questions you can left. Now coming to section of reasoning, analytical and logical reasoning, how paper will come. So first chapter is problem based on English alphabet. From this chapter, two questions will be there. Problem based on English alphabet, two questions will be there. Coding, decoding, two question. Direction and distance, two question. Blood relation, two question. Ranking arrangement, two question. Sequence and series is very important chapter. From this chapter, 3 to 4 questions will definitely come. Sequence and series, that is the letter series can come, number series can come, and miscellaneous series can come. Yeah, alphanumeric symbol series questions can come from this chapter. Venn diagram and syllogism, again this from this two questions will come. All A are B, all C are A. This type of question will come under the Venn diagram and syllogism. Analogy or classification, again we have to find the relationship between the two two words which is given, and according to that relationship we have to find out the next two words, that is analogy or classification. Next is the sitting arrangement. Sitting arrangement, very important chapter, two questions will come from this part. In sitting arrangement, there are various types of question, that is square sitting, circular sitting, front sitting, and taller questions, based questions, size based question. These type of question will come under the sitting arrangement. Next is the odd one out. In this, four options will be given, and out of the four options, one is uh, unlike the three. One is not same, three are same, one is not same. So this is odd one out. Approximately, approximately total 10 chapters are very important in reasoning, from which question has to become, that is problem based on which of two question, coding decoding two question, direction and distance two question, blood nutrition two question, ranking and arrangement two questions, sequence and series 3 to 4 questions, Venn diagram and syllogism two questions, analogy classification two questions, sitting arrangement two question, and odd one out one question. So here total questions will be approx 17 questions will be there from these 10 chapters. Out of left 8 questions, the 8 questions can come from logical arrangement of words one question, mathematical operations or symbols, that is based on the Bodmas rule. Bodmas rule, one question can come from this chapter. Dice, again one question from can come from this chapter, dice. Missing number, mirror image, this is not very important chapter, question can come from this chapter, or it might be that it not come from this chapter. पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग और इनकम्प्लीट फिगर और स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, या तो पेपर कटिंग फोल्डिंग का आ जाए, या इनकम्प्लीट फिगर का आ जाए, स्पॉटिंग आउट द एम्बेडेड फिगर, एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, 16 चैप्टर से आना है. नेक्स्ट है कैलेंडर और क्लॉक, एक क्वेश्चन कैलेंडर से आ सकता है, एक क्वेश्चन क्लॉक से आ सकता है. नेक्स्ट है काउंटिंग ऑफ फिगर्स. काउंटिंग ऑफ फिगर्स का मतलब है कि एक ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स बने होंगे, हमें टोटल आउट बताना होता है कि कितने ट्रायंगल्स हैं टोटल, या स्क्वायर के अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स बने होंगे, उसके अंदर बताना होता है कितने स्क्वायर्स होंगे. तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स से भी एक क्वेश्चन चांसेस है कि आ सकता है. टोटल हमें 25 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें से ये जो फर्स्ट 10 चैप्टर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. फर्स्ट 10 चैप्टर्स हमको इंपॉर्टेंट वे में प्रैक्टिस करना है. बाकी जो चैप्टर्स हैं उससे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ये फिक्स है.
चैप्टर नंबर 13 से एक क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 16 से एक क्वेश्चन आएगा, एंड चैप्टर नंबर 17 18 से भी माइट एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। तो ये पूरा एनालिसिस है कि पेपर जो है वो कैसे आ सकता है। 25 क्वेश्चंस के सीयूटी जनरल टेस्ट में लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट आपका 25 क्वेश्चंस कैसे डिवाइड हो सकते हैं, ये पूरा इसका समरी एनालिसिस है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल स्टूडेंट्स।